Hey everyone, welcome back to Nile's tutorial with your trainer Shreya. And in today's video, we are going to learn the uses of articles, that is a, an and the. But before starting these, let's remember certain things. The first is that as we know in English, total we have 26 alphabets, out of which 5 are vowels, that is A, E, I, O, U. In Hindi we say them swar. A, E, U, A, O. And rest 21 are consonants. In Hindi we say them vyanjan. Whatever is left out of A, E, I, O, U, उनको हम consonants बोलते हैं. In Hindi we say from क से ज्ञ तक. A and an are called as indefinite articles and the is called as definite articles. So let's learn first the usage of an. ऐसे शब्दों के साथ हम एन को यूज़ करते हैं जिनका उच्चारण स्वर से होता है. स्वर मीन्स अ, ई, उ, ए, ओ. फॉर एग्जाम्पल एन ऑक्स. अब यहाँ पर ऑक्स को जब हम बोल रहे हैं तो ओ की साउंड आ रही है. सिमिलरली एन एप्पल, एन एग. अब यहाँ जब हमने एग बोला तो ए की साउंड आ रही है. एन MLA, an important task, an honest man. अब यहाँ H silent है. It is not honest, it is honest. An hour, an MA, an inkpot. Let's see some more examples. An umbrella, an American, an Indian, an honest man, an owl, an MP, an engineer, an orange, an SP, an MLA, an MA, an air hostess, an I, an honest worker, an unimportant work, an excellent student, an FIR, an X-ray, and many more words are there. Now let's move to the usage of a. ऐसे शब्द जिनका उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, इट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम अ को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल a boy, a kite, a doll, a monkey, a small thing. University. अब जब हमने यूनिवर्सिटी की बात करी तो इससे पहले हम एन नहीं लगाएंगे. वॉवल से शुरू हो रहा है बट स्टिल हम इसके आगे अ यूज़ करेंगे बिकॉज जब हम इस वर्ड को बोल रहे हैं तो ये व्यंजन साउंड आ रही है इसमें. यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही है तो इसलिए हम बोलेंगे अ यूनिवर्सिटी. Let's see a few more examples. A house, a union, a year, a member of parliament, a pen, a car, a housewife, a servant, a maid, a historical building, a 10-rupee note, a dozen, a mile, a long walk, a month, a 1,000-rupee note, a cup of tea, a slice of bread, a college, a candidate, a uniform, a 1-rupee note, and many more. These were the usage of a and an. I hope your confusion is clear. We will be back with the usage of the in some other video. Till then, stay tuned.